Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 3. The chapter which we are related with is non-trading concern. आज आप देखिए the shape of the question. It's quite similar to the previous question. दो columns हैं. Left side you have receipts, right side you have payments. थोड़ा सा अलग काम ये है कि there are some adjustments as well. Yesterday we have seen adjustment and today adjustments are also present. Overall, there is no change in question. Simply we will solve adjustment as our first step, and then all these payments would be transferred to this side of expenditure and all receipts would be transferred to this income side. Apparently it's very simple question. I hope in future after 4 or 5 questions we will be having some very interesting figures. So for the time being we have seen introduction of this question. Let's start. अच्छा जी, सबसे पहले following particulars are obtained from the books of this and that ended receipts. हमने चूंकि डिसाइड किया था कि we will be solving adjustments as our first step, तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं. एनुअल सब्सक्रिप्शन 20. थोड़ा समझने की जरूरत है, आप इसको ध्यान से देखिए. पूरे साल में हर बंदे को 20 रुपए जमा कराना पड़ते हैं. मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ये बुक बहुत पुरानी है, अराउंड 40-50 ईयर्स ओल्ड. पहले ये इसका राइटर और था, फिर दूसरा राइटर आया, तो उन्होंने वही क्वेश्चन चलाई जा रहे हैं. सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि एनुअल सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग जस्ट 20 रुपीज, सिर्फ 20 रुपए आप ले रहे हैं. तो इसलिए आपको फील हो रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं कहीं और जस्ट गिविंग 20 रुपीज. 100 members are in arrear. Arrear we have already seen: outstanding, owing, arrears, not received, receivable, not received yet. All these words are seen. बहरहाल ये है outstanding और हमने पहले कुछ डिस्कशंस शायद की हो. हाँ, ये देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड और प्रीसेल्ड. अब इसके अंदर ये आ रही है आउटस्टैंडिंग इनकम. इनकम कैसे डिसाइड की? क्योंकि इट इज सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन किस साइड पे लिखी हुई है? लुक एट हियर, इनकम साइड पे. अब एक दफा इसको ट्रांसलेट दोबारा करते हैं. ईच मेंबर इज पेइंग 20. 100 मेंबर्स हैड नॉट पेड येट, यानी कि 100 बंदों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं दी और हमने रिसीव नहीं की. तो फिर टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? इफ ईच मेंबर इज पेइंग 20, we are receiving subscription from each member 20, and from 100 members we have not received. So 20 multiplied by 100, 2000 subscription is still outstanding. अच्छा, और दूसरी बात आपको पता है कि जो भी चीज यहाँ लिखी हुई है we will be writing over here. यहाँ पहले आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और देखें जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है यहाँ लिखी हुई है 18,000. So that would be written 18,000 inner column, and outstanding subscription हमें पता है कि that would be added. add outstanding subscription वो कितनी है वो अभी हमने वैसे कैलकुलेट भी किया, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ. how did we calculate? there were 20 members and each member pay 100 rupees, so total 2000 rupees is still outstanding. बाहर क्या करेंगे? टोटल 18,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई हुई है. ओके, ज्यादा सारे इज इक्वल टू पढ़ गए, कम कर देते हैं. सो टोटल सब्सक्रिप्शन वाज 18,000 वी हैव रिसीव्ड, बट स्टिल 2000 इज आउटस्टैंडिंग. दैट वुड बी एडेड. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड और आपको इसका सेकेंड इफेक्ट भी आना चाहिए. आउटस्टैंडिंग इनकम वुड बी प्लेस्ड टू एसेट साइड व्हेन वी विल बी मेकिंग बैलेंस शीट. अब यहाँ देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अगेन बैलेंस शीट इज नॉट required from the question. So simply what you will do, only income expenditure account. Next देखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर पेड अप टू मार्च 23. अब वापस जाएं, यहाँ देखिए 22 लिखा हुआ है एंड वी हैव पेड अप टू 23. अब आप दोबारा पहचाने के ये क्या है. If you have paid something in advance, that would be called prepaid expense. So this adjustment is related to prepaid. और दूसरी बात, municipal taxes
आप देखिए ये लिखेंगे। सो दिस इज योर पेमेंट साइड। आपको पता है इसको इधर लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। सो हेयर एक्सपेंडिचर पहले आप लिख लें, म्यूनिसिपल टैक्सेस। पहले देखते हैं इसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, एंड दैट इज 3200। पोस्ट 3200 ओवर, post 3200 over here, and then since it has been paid for the next year, that is prepaid, and prepaid would be subtracted. And how much amount? Municipal taxes are paid up to March. How many months? 3 months municipal tax has been paid in advance. अब जरा गौर से देखिए, total amount was 3200, while for 3 months, 3 over 12, this payment is for advance. अब इसको यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताता हूँ। 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय किधर गया, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सो वी हैव 800। यहाँ मेंशन कर देते हैं कि 800 वाज प्रीपेड। दोबारा समझने की जरूरत हो ना तो रिवाइज भी कर लिया करें, मैं भी दोबारा बता देता हूँ। टोटल एक्सपेंस वाज 3200, बट हियर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च वाज were those months related to the next year. So 3 month payment is advance. Total payment was 3200. To calculate 3 months payment, we will multiply it with 3 and divide it with 12. So we have got 800, which is actually prepaid. और prepaid को क्या करते हैं? Subtract. Total amount 3200 and 800 was prepaid. So we have got 2400. अच्छा जी, these were two adjustments and that has been completed. अब वो थोड़ा सिंपल काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ वाली सारी अमाउंट्स को हमने इस साइड पर लेकर आना है, बिकॉज दीज आर रिसीट्स। बैलेंस ओपनिंग, एज यू नो, इट्स अ कैश बैलेंस, कैश इज एसेट, डू नॉट राइट। देन वी हैव इंटरेस्ट फीस 2000, इंटरेस्ट फीस 2000। Next is life member. I have told you life member fee is doubtful. It might be capital, it might be revenue, and we have our own choice. So we are writing it over here. Life membership fee. We are making it revenue 10,000, although it has not been mentioned in the question. आगे है जी annual dinner. So put annual dinner over here. How much amount? 12,000. So put 12,000 over here. Next, hall rent. अच्छा, आप अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लीजिएगा कि उन्होंने कोई एनुअल डिनर करवाया और अपने ही हॉल में अपने ही मेंबर को डिनर करवा के दे आर रिसीविंग रेंट फ्रॉम देम। सो हॉल रेंट 6,000. So it's quite understandable. Then miscellaneous income. In previous question we have taken its concept when miscellaneous E तो नहीं आ रहा, नहीं, EOUS है। Okay, miscellaneous receipts and amount of miscellaneous receipt mentioned 1200. So we have already told you when there are several receipts from members, but instead of writing with each separate heading, you have added and sum up all receipts and named them as miscellaneous receipts. एग्जाम्पल में बताया था कि चाय पिलाई, उसके 50 रुपए ले लिए, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तो बजाय इसके कि आप उनको अलग अलग हेड दें, तो ये छोटे छोटे जो रिसीट्स थी उन सबको इकट्ठा करके मिसलिनियस का नाम दे दिया। सो दिस साइड हैज बीन कंप्लीटेड। अब इस साइड पे आ जाए। सैलरीज वर 6,000। अब याद रखिएगा म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑलरेडी रिटर्न, यहाँ डबलिंग हो जाती है। सो सैलरीज 6,000 mention over here. Then we have printing, और हमें पहले ही पता है printing expenses is revenue type of expense. We do it again and again. This would be considered as 600. Then postage, yes, it's a revenue expense. We do it again and again.
And how much amount of postage? 3600. ये postage का भी जो concept है ना, it's very old. Around 20 years back, there were no phones, no mobile phones. Uh, I'm talking about mobile phones. So what people do when they want to give any message, they write on the paper and then they post that letter. And postman will take that letter from their house or from post office and will physically transfer that letter to the next city or next destination. So it quite difficult and complicated sort of thing. Single message was very difficult to transfer from one place to another place. अगर आपको लिखी हुई कोई बात एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ मैसेज आपने एक लिखना था और वो फोन वाला मैसेज नहीं है, लेट्स से कि वो कोई रिसीट है, वो पहुंचानी है आपने किसी और जगह, तो पोस्टेज क्या होती थी, एक जगह से आप एक बंदे को, उसे डाकिया बोलते थे, वो पोस्टमैन होता था, वो लेटर आपसे लेता था और खुद फिजिकली चल के जाके वो लेटर कहीं पोस्ट करता था, जैसे आज डिलीवरी बॉयज राइडर्स होते हैं, एट दैट टाइम देयर वर पोस्टमैन. अच्छा जी, 3600 वी हैव ऑलरेडी रिटर्न. After that we have electricity charges. As you know, electricity charges mean these are electricity bills. So 2400 revenue expenses, we will write them. After that, annual dinner charges. So we are giving them dinner but receiving charges from them. Similarly, if you are a student, you do know it very well when there are college campus dinners, so they will receive amount from you. So you can understand it's quite simple. It's your college, it's your dinner, but college is receiving dinner charges from you. In the same manner, we have the same phenomena present over here. Total annual charges amount was 9600. इसको यहाँ लिख लेते हैं. After dinner charges, we have fixed deposit. Look at, it's very clear. Fixed deposit account mean bank account, and this bank account is asset, leave it. Balance is also asset, leave it. So guys, we have seen that all items we have put accordingly. Now simply we will see total of both sides. Total of this side is 24600 and total of this side is 51. It means your income side is more than your expense side, तो balance छोटी side पे आएगा इधर. अगर income is more than your expense, this would be called your surplus, but actually you are calculating it as your balance. How you will calculate? You will take larger amount and subtract smaller amount, which is 24600. सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास 26600 और हम अब इसका आंसर लुक एट हियर सरप्लस 26600 and our surplus is also 26600. So guys, in this way our question has been completed. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आई एम जस्ट ओपनिंग यू. इफ यू फील एनीथिंग डिफिकल्ट, जस्ट शेयर. I will try my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.